Myself, Ritesh Sunilaire, welcomes you to the subject two-wheeler and three-wheeler technology of Automobile Diploma, 5th semester, MSBT, Shivaji Rao S. Zundaye Polytechnic, Asangaon. The very first unit in the subject is Unit First, Frames and Chassis. In this unit, we are going to study following 4 points. The very first one is frames. In frames, we will see different types such as single cradle frame, double cradle frame, tubular frame, engine as stress member, and twin spar. In second part, we are going to study the chassis, which has two types: conventional and monocoque or integral. And we will also see the difference between frames and chassis in the same unit. Then the third point will be the simple one: layout of a two-wheeler and three-wheeler, as the name of subject suggested. And finally, we will see the frame materials, mainly three, and that is alloy steel, aluminum alloy, and carbon fiber. Now, before starting the unit, we will see the difference between frame and chassis. Okay, so here I have given you the comparison table, and this first we will see the difference between the meaning. Now, in frame, they say that frame that it is the main structure of the chassis with all the other components fitted to it. And what is chassis? The meaning of chassis is that it is the skeletal framework of vehicle fitted with most of the mechanical parts. Okay, now if you will see the difference between the meaning, it is simply chassis consists frame and some mechanical components, whereas frame does not have the mechanical components, and it is a just a structure or a base for the fitment of those mechanical parts. तो अभी इसे हिंदी में अगर बताऊँ तो फ्रेम फ्रेम और चेसिस में ये डिफरेंस है कि फ्रेम यानी आपका अदर मैकेनिकल पार्ट्स को फिटिंग करने के लिए उसके ऊपर प्रोविजंस दिए हुए होते हैं, और चेसिस में जब वो सारे मैकेनिकल पार्ट्स उस फ्रेम के ऊपर फिट हो जाए तब वो हो जाती है आपकी चेसिस. आगे मैं आपको डायग्राम्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि फ्रेम और चेसिस में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है. Now from the design you will get the more clear concept of the difference. As you can see in the frame, in the design section they have given design as the vehicle's body as everything else fitted on it, whereas chassis is given as design as the minimum requirement for any vehicle to move. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फ्रेम का डिज़ाइन में क्या है कि आपका व्हीकल बॉडी जो है ऐसा बॉडी व्हीकल बॉडी का वो पार्ट जिस पर सारी चीज़ें फिट की जाती है, और चेसिस क्या होती है आपकी गाड़ी, जब आपके गाड़ी का उतना पार्ट जो सेल्फ प्रोपेल्ड हो. ओके, उसके ऊपर कोई फ्रेम सीट्स नहीं होती, लेकिन वो मूव हो सकता है फ्रॉम वन टू अदर पार्ट, तब होता है चेसिस. लेकिन जब वो मोशन करने वाले पार्ट्स उसमें नहीं होते जिनकी वजह से मोशन होती है, तब उसे कहा जाता है फ्रेम. फर्दर components you can see in frame, the chassis is attached to the frame. And what is chassis? The other components including tires, axle assembly, steering, brakes, and the engine are fastened to it. Means when only chassis is attached, I mean when no tires, axles or assemblies are attached to the given frame, it is known as frame. Given structure, it is known as frame. And when the tires, suspensions, steering, brakes and all are fastened or attached to the structure, then it becomes chassis. मतलब क्या है, जब आपका गाड़ी का वो पार्ट, जब आपका गाड़ी मूव नहीं हो सकता खुद से, तब होता है वो आपका फ्रेम जिसके ऊपर आपका चेसिस लगता है. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चेसिस. और चेसिस कब कहा जाएगा? उस पार्ट को जब आप टायर्स, सस्पेंशंस, ब्रेक्स, फिर बाद में एक्सेल्स, ये सारी चीज़ें आप जब उसे लगा देते हो तब वो हो जाता है चेसिस. तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है. अभी आपको जो आगे मैं डायग्राम प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि आपका फ्रेम और चेसिस में क्या कंपैरिजन है. आपको वो डायग्राम देखनी है, अगेन वीडियो रिवाइंड करके आपको ये टेबल कंपैरिजन पढ़ना है, आपको क्लियरली समझ में आएगा. नाउ कमिंग टू द डायग्राम्स, द फ्रेम, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, frame has on two longitudinal members to them, which are the horizontal members holding them together. It has the provisions for fittings of various components, but no other components are fitted on them. ओके, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपका जो फ्रेम है उसमें दो आपके वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ने एक फिक्स पोजीशन पे हेल्ड करके रखा है. वहाँ पे और मैकेनिकल कंपोनेंट्स फास्टन करने के लिए या फिर माउंट करने के लिए
प्रोविजंस दी हुई है लेकिन उसके ऊपर और कोई कंपोनेंट नहीं, तो ये होता है आपका फ्रेम, इसे कहा जाता है फ्रेम। जब इसके ऊपर अगर आप दूसरी डायग्राम देखोगे चेसिस में, उसके ऊपर आप सारे कंपोनेंट्स लगा दो, एसेंशियल कंपोनेंट्स टू मूव द व्हीकल, मतलब आपकी जो चेसिस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाए, खाली उतने ही कंपोनेंट्स अगर आप लगाओ, ओके, जितने कंपोनेंट से आपकी फ्रेम मूव हो सके, खाली उतने ही कंपोनेंट्स अगर आप लगा देते हो तो वो बन जाता है आपका चेसिस। अगर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इसमें टायर्स है, सस्पेंशन है, इंजन और स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, जिससे ये आपका जो फ्रेम था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो लेकिन अभी इसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स लगने के बाद ये बन गया आपका चेसिस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका फ्रेम्स एंड चेसिस में। नाउ आफ्टर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन frame and chassis, now we will come to the two wheeler and three wheeler topic. In two wheeler, the frame and chassis cannot be classified. uh, Sometimes the same structure is called as frame, or sometimes same structure is called as chassis, because in some bikes engine itself is a part of frame, so it is a little bit difficult to classify between the frame and chassis. And in our further topic also, there is no mention of chassis while studying the two-wheeler body. They have only mentioned it as a frame, so we will also consider it as only a frame and we will study its functions. तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि आपका टू व्हीलर्स में फ्रेम्स और चेसिस ऐसे डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके फ्रेम में ही आपका इंजन एज ए स्ट्रेस मेंबर होता है, ओके। सो समटाइम्स कभी कभी इसे चेसिस भी कहा जाता है और ही फ्रेम्स भी कहा जाता है। अभी स्टडी करते वक्त हम उसे फ्रेम ही कॉल करने वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में चेसी करके टर्म यूज़ नहीं किया है टू व्हीलर के लिए। लेकिन जब अगर आप फ्रेम के ऊपर जो नंबर देखते हो उसे चेसी नंबर कहा जाता है। सो उसे चेसी और फ्रेम एक ही होता है टू व्हीलर में, इधर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम फ्रेम और उसके फंक्शंस देखेंगे फॉर टू व्हीलर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है उसका मेन, इंजन को सपोर्ट करना, राइट, इट सपोर्ट्स इंजन। देन पेट्रोल टैंक, राइट, पेट्रोल टैंक भी आपके फ्रेम पर ही सपोर्ट हुआ रहता है। यूर सीट्स, बाकी के बॉडी एलिमेंट्स, बॉडी पैनल्स, सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रेम के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। तो फ्रेम का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, इट्स टू सपोर्ट्स द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर बाइक एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द व्हील्स थ्रू सस्पेंशन। आगे आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं आपके स्प्रिंग सस्पेंशंस, जिसमें भी टाइप्स होते हैं जो हम आपका जो सस्पेंशन सिस्टम जो है आपके यूनिट, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Now coming to the frame geometry, in two wheelers frame geometry, that is there are three frame geometry, that is wheelbase, your rake angle and trail. Now, the wheelbase is simply the distance between the two wheels, which totally depend upon three things, that is your swing arm, the length of swing arm and the angle, rake angle, and the fork length. To get a clear idea of wheelbase, here is the video. Link for the further video to watch it in a complete view. I have given the link in description. If you wish, after completion of our lecture, you may visit to the video. The wheelbase plays a major role in the characteristic of a motorcycle. It affects how tightly a bike wants to turn through a corner, how the bike is going to pitch, and also just affects the overall stability and agility of the bike. My name's Aaron from 01 Racing, and in this video we're going to be looking at wheelbase, what it is, the effect it has on the bike, and why, when adjusting it for racing, there may be more to it than you think. So let's start by looking at what the term wheelbase actually refers to. Wheelbase is the horizontal measurement from the front wheel contact point to the rear wheel contact point. So when compared with something like trail, the measurement itself is actually quite simple. But what effect does it have on the bike? Wheelbase plays an important role in the directional stability of a bike. This is the tendency for the bike to want to stay aligned in the direction of travel. So increasing the wheelbase will generally make the bike more directionally stable. Another important factor here is the trail, so this must be considered along with the wheelbase when discussing the stability. Okay, this was your wheelbase video about the wheelbase. Now coming to the second frame geometry, that is trail. Trail is nothing but the distance between the point on ground where vertical line is passing through axle and a line along the steering passes through axle meets the ground. मतलब आपके फ्रंट व्हील का जो एक्सेल होता है
उसके थ्रू जो एक परपेंडिकुलर टू ग्राउंड जो लाइन ग्राउंड को टच होती है वो पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट वो जो आपका जो सस्पेंशन होता है, फोर्क होता है, उसके थ्रू जो लाइन जाती है एक्सेल को पास करते हुए और आगे जाके ग्राउंड को टच होती है वो पॉइंट, उन दो पॉइंट में का डिस्टेंस जो होता है उसे कहा जाता है ट्रेल। ओके। और वो लाइन और आपका जो वर्टिकल लाइन जो मैंने पहले बताया, उन दोनों के बीच में अबव द एक्सेल जो एंगल बनता है फ्रॉम द ग्राउंड उसे कहा जाता है रेक एंगल। तो अगेन ये चीज़ भी आपको विजुअली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने और एक वीडियो आपको दी हुई है। अगेन इसका भी अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, नाउ प्लीज़ वॉच द। If we imagine a line through the centre of our steering stem, this is our steering axis. This is the axis which the front wheel, the triple clamps, the forks all rotate around when we steer the bike. So the angle from our steering axis to the vertical is our rake angle, and the distance from the steering axis to the centre line of our forks is our offset. So if we measure along the ground from our front wheel contact patch to where the steering axis intersects the ground, this is our trail value, or to be more specific, it's our ground trail value. So when we talk about trail, this almost always means ground trail, but there is another type of trail, and this is called normal trail or real trail, and this is the perpendicular distance from the contact patch to the steering axis. So let's now look at the things which affect our trail. So when our rake angle increases, we get a larger trail value. But when our offset increases, the trail value reduces. And finally, a larger front tyre size will give us a larger trail value. So the rake angle, the offset, and the front tyre size all contribute to our resulting trail value. So this was all about frame geometry. Now the remaining topics, that is the types of frames and all for the two wheelers, we will study in the next lecture. Till then, thank you.